भाई आपके जब अगर फॉलोइंग दोस्तों को अगर आप अलीगढ़ लेकर जाएंगे, एमयू लेकर जाएंगे, तो उनको आप क्या दिखाना पसंद करेंगे? शाहरुख खान को आप क्या दिखाना पसंद करेंगे अगर वो एमयू आते हैं? शाहरुख को चाय की दुकान पे किधर बिठाना पड़ेगा? तापसी को अगर आप एमयू लेकर जाएं तो कहाँ पर आप लेके जाना चाहेंगे? तापसी एक्चुअली अनफॉर्चुनेट है कि वो अलीगढ़ नहीं गई, वो बनी है अलीगढ़ के लिए। मतलब अगर तापसी को आप अलीगढ़ भेज दो तो एक्चुअली बॉयज हॉस्टल में रख दो उसको। वो हर चाय की दुकान पे मिलेगी। वो संजय दत्त साहब को अगर आप एमयू लेकर जाएंगे तो? संजू को तो कैंटीन में लेके जाएंगे। दस बहाने या छम्मक चलो? You know, I have to be very serious about this. I can't give you a frivolous answer. Ra.one didn't deserve such criticism. I think it should have been lauded for a whole lot of its achievements, which is happening now, but when I don't care anymore. You were hurt by the certain, I think, unfair criticism that came from within the industry. Make me use some unparliamentary language, but I don't give a damn about it anymore. You know what I mean. जी. Rapid fire with अनुभव भाई, तो उसमें आप लोगों का थोड़ा तो पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है, बिकॉज certain सवालों के शायद जवाब आप लोगों से भी मिले. Your first reaction when I say the following things: Matri Omelette, Love. mass cinema, Love. censorship in films, Hate. alright, food in Banaras, Fantastic vegetarian food. alright, and any favorite? Any favorite? Everything about Banaras I love. My company is called Banaras. Yeah. I'm half made up of Banaras. I love Banaras. Okay, and Boston. Boston, I will see. I have just driven straight into this venue, but two of the universities that I could have never gone to exist here, and but one I managed to sneak into today, and the other I will tomorrow. And I'm looking forward to looking at the fall colors around tomorrow. I think you love it. I'm going for a drive. भाई इन फॉरेन सेलिब्रिटीज को आपके दोस्त हैं? मटरी ऑमलेट के बारे में भी बोलना चाहता हूँ. प्लीज. इतनी जिंदगी का इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो, उसको ऐसे अपन इग्नोर नहीं कर सकते. आप में से कितने लोग अलीगढ़ नहीं गए हैं? अरे वाह, मजा आएगा. मटरी ऑमलेट जानते हैं क्या है? मैं फूडी हूँ तो मैं डिस्क्राइब करूंगा प्यार से, सुनिएगा. और दिस गोज ऑन रिकॉर्ड आल्सो. मटरी जो है, ऑमलेट हम सब जानते हैं. ये वो ऑमलेट है जिसमें हरी मिर्च होती है, नमक थोड़ा ज्यादा होता है. मटरी ऑमलेट. मटरी जो है एक ब्रेड है. जो मटरी हम जानते हैं वो नहीं. वो ब्रेड है, उसका डायमीटर सर्कुलर है, करीब 6 इंच का डायमीटर होता है, 4.5 से 6 इंच का, राइट? और वो सख्त होती है ब्रेड. वो उसको आप बस तोड़ेंगे तो टूट जाएगी. और वो बनाई शायद इसलिए गई थी कि मटरी और मक्खन खाते थे, तो 2 मटरियां ऊपर उस पे मक्खन सैंडविच करके, कभी शक्कर डाल के ऐसे उसको फिर 3 टुकड़ों में काट दिया. तो ये तो हुई मटरी. वो ब्रेड थोड़ी मीठी होती है. अब आप इन 2 मटरियों के बीच में अगर एक ऑमलेट रखते हैं, और अब इसको मेरे मुंह में पानी आ रहा है, अब आप इसको एक तवे पर सेके तो वो थोड़ी सी सौगी हो जाती है. हाँ, मक्खन में वो थोड़ी सौगी हो जाती है. जब आप उसको खाते हैं तो मटरी की एक मिठास होती है और ज्यादा नमक वाले ऑमलेट की खटास होती है. वो एक आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन है. अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेड हिंदुस्तान में लाइक ऑल द अलीगेरियंस और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ वही मिलती है. तो चाहे अलीगढ़ सिर्फ इसलिए जाए कि मटरी ऑमलेट, क्योंकि वो आप मंगा के नहीं खा सकते. एक्चुअली अब तो आजकल आता है ना कुछ ऐसे. भाई मैंने तो मंगवाया भी है, भिजवाया भी है लोगों को. मैंने कुरियर मुझे भी भिजवाओ. बिल्कुल मैं कराता हूँ. आप पहुंचिए, मैं आपको करता हूँ 100%. जी 100%. फ्रीजर में सॉगी हो जाएगा ना. नहीं व्हाट, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू डिस्कस फूड विद सो मच लव. नहीं भाई, आप बॉम्बे पहुंचिए, मैं आपको भिजवाता हूँ 100%. इसको अलीगढ़ का बिस्किट भी कहते हैं, और इसकी खासियत ये है कि वो अभी भी कागज में आता है. न्यूज़पेपर का जो अखबार होते हैं उसमें रैप करके वो आता है. सो उसके आई थिंक वो भी एक उसको बहुत ही यूनिक सा चार्म है.
which is amazing. Okay, भाई आपके जब अगर फॉलोइंग दोस्तों को अगर आप अलीगढ़ लेकर जाएंगे, एमयू लेकर जाएंगे, तो उनको आप क्या दिखाना पसंद करेंगे? शाहरुख खान को आप क्या दिखाना पसंद करेंगे अगर वो एमयू आते हैं? शाहरुख को चाय की दुकान पे किधर बिठाना पड़ेगा? He loves tea and coffee. वो coffee mostly. But I would take him to a मोहम्मद की दुकान पे, मोहम्मद के रेस्टोरेंट पे, वहाँ बैठ के 20-22 घंटे चाय पीना। तो क्या लगता है आपको क्या रिस्पॉन्स होगा? Will you enjoy the experience? Of course. आयुष्मान खुराना को अगर आप एमयू लेकर जाएंगे तो कहाँ पर आप उनको लेकर जाना चाहेंगे? आयुष्मान को कहाँ ले जाऊँगा? वैसे टी टोटल सब बोरिंग आदमी है वो। उसको कहाँ ले जाऊँ? आपको क्या लगता है मैं किसी से डरता हूँ? आयुष्मान को मैं किसी लाइब्रेरी में ले जाऊँ? नहीं, एक्चुअली आयुष्मान को मैं म्यूजिक क्लब ले जाऊँगा। हाँ, उसको म्यूजिक बहुत पसंद है, बहुत पैशनेट है म्यूजिक के बारे में। Yeah, I think he'll love that experience. Okay, तापसी को अगर आप एमयू लेकर जाएं तो कहाँ पर आप लेकर जाना चाहेंगे? तापसी एक्चुअली अनफॉर्चुनेट है कि वो अलीगढ़ नहीं गई, वो बनी है अलीगढ़ के लिए। मतलब अगर तापसी को आप अलीगढ़ भेज दो तो एक्चुअली बॉयज हॉस्टल में रख दो उसको। वो हर चाय की दुकान पे मिलेगी। वो मोस्ट हिंदी में एक शब्द होता है, उसका उर्दू में क्या, स्वच्छंद। स्वच्छंद के लिए बेहतर अंग्रेजी वर्ड किसी को दिमाग में आ रहा है? प्योर नहीं सर, उसमें कुछ फीलिंग है, मतलब शाब्दिक तो आप सही कह रहे हैं, बट उसमें नहीं। स्वच्छंद इज free spirited. liberated is closer to it. Free spirited. She's one of the most liberated souls I have met. Free spirit. Free spirited. Bindas is also a good expression. संजय दत्त साहब को अगर आप एमयू लेकर जाएंगे तो कहाँ पर? संजू को तो कैंटीन में लेके जाने का। So people who've not been to AMU campus, they cannot understand the sentiment behind canteen. हाँ। उसकी क्या अहमियत है कैंटीन? Actually मुझे तो 5 में से 3 साल तक तो मुझे ये लगा रहा कि मेरा एडमिशन कैंटीन में हो। तो सुबह तैयार होके हॉस्टल से बंदा निकलता था, इतनी ठंड पड़ती है वहाँ पे, और जाहिर है गीजर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, नहाने का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट फिर भी हम लोग ऐसे तैयार होके जाते थे और कॉलेज के गेट में घुसे और कदम अपने आप कैंटीन की तरफ चले जाते थे। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैं भी इस बार गया तो अब वहाँ पे कैंटीन नहीं रह गई है, वहाँ पे कुछ और बना दिया है। तो कॉलेज का जो करना है वो कर लीजिए, उसके बारे में हमारी कोई ओपिनियन नहीं है। कैंटीन मत छेड़िए प्लीज। हाँ, ये पता नहीं क्या कर रही है। राजकुमार राव को अगर आप एमयू लेके जाएंगे तो कहाँ पर लेके जाना चाहिए? राजकुमार राव को ड्रामा क्लब में ले जाऊंगा कि बच्चों को अच्छी अच्छी एक्टिंग सिखाओ, तो कमाल का एक्टर है। तो हाँ, उसको ड्रामा क्लब में बिठा दूंगा, ताला बंद कर दूंगा, बाहर निकलने का, अंदर जाने का ताला खुला रहेगा, बाहर निकलने का ताला बंद कर देंगे। हाँ, मैं छोड़ा उसको। ओके भाई, ये या वो दोनों में से आपको 2 चॉइसेस में अगर आपको एक चॉइस अगर आपको पिक करना है तो आप कौन सा करना चाहेंगे? दोनों खराब चॉइसेस हो तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगी। ओके। और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चॉइस है, सवाल है जो मैं पूछने वाला हूँ। हो सकता है कि आप लोग शायद उसमें मदद कर पाए। अनुभव है कि वैसे मदद जरूरत नहीं पड़ेगा, नो भाई ऑलरेडी नोस आई थिंक योर आंसर। जे हाँ, जाहिर सी बात है, नहीं लेकिन ये चॉइस करना है और ये मुश्किल है भाई। हैदराबादी बिरयानी या लखनवी बिरयानी? अरे उसमें क्या कंट्रोवर्सी है? एक्चुअली भाई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, इतना डिबेट है इसके ऊपर। दोनों बड़ा सब्जेक्टिव है यार, तो ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सो इफ यू गो बाय द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ अवधी बिरयानी, देन इट्स नॉट बिरयानी, इट्स यखनी पुलाव। और जो बिरयानी की जो परंपरागत परिभाषा है वो हैदराबाद में बनती है या शायद कराची में बनती है, मैंने सुना बहुत अच्छी, मैंने खाई नहीं है। मुझे क्या पसंद है? अवधी। मुझे यखनी पुलाव। 10 बहाने या छम्मक चलो? Both are blockbusters, both have great songs, both are shot well. I would say Das Bahaane. I'll tell you why. Okay. Because when we shot Das Bahaane,
Nobody was as big a star as Shah Rukh Khan was when we shot Chammak Challo. Right. So Shah Rukh Khan being in a song, आधा काम गेम तो वही खत्म हो जाता है. Right. I was doing Dus Bahaane with people who were not musical stars. So then the success of Dus Bahaane is more accomplished. Chammak Challo had Akon and Shah Rukh Khan and Kareena Kapoor. Yeah, Dus Bahaane. All right. Sudhir Mishra, yeah, Anurag Kashyap, the filmmaker, was more inspiring for you. So Kashyap is more inspiring for me, but I learn more from Sudhir bhai. I don't know if I can explain this. There's more to learn from Sudhir bhai. Kashyap, I like his courage, his choices, and also Sudhir bhai's, but also not in the same league. So I don't know if you should, I don't think you can compare the two in that sense. Directing, yeah, producing films. Producing is something that I have to do to be able to earn my choices, not the money. Right, of course. City which has the best food according to you. I have to be very serious about this. I can't give you a frivolous answer. I think the city that can give you a much wider range of fantastic food is Delhi. तो वहाँ आपको अच्छी चाट भी मिल जाएगी, वहाँ आपको अच्छा इटालियन भी मिल जाएगा, वहाँ आपको अच्छा मुगलई भी मिल जाएगा, आपको पंजाबी भी मिल जाएगा, हर प्रकार का खाना मिल जाएगा. नहीं, मुंबई का खाने से कोई लेना देना नहीं. I agree with that. मुंबई का हिंदुस्तानी खाने से, when I say हिंदुस्तानी, I mean all the foods, से कोई लेना देना नहीं. मुंबई में इंटरनेशनल खाना अच्छा है, लेकिन अगर गोश्त खाना है तो आपको लखनऊ जाना पड़ेगा. आपको मिठाई खानी है तो आप बनारस जाना पड़ेगा, कलकत्ते जाना पड़ेगा. So I can do a blog on food, so don't worry. By 3 Matri Omelette, हाँ वो तो अलीगढ़ में, वहाँ अलीगढ़ ही जाना पड़ेगा और कहीं नहीं जा सकते. 3 best restaurants or food joints in India. The best nihari is in Lucknow, Rahim ki nihari. And let's talk about some vegetarian food. Amritsar for kulche. Sorry, मैंने अमृतसर का नाम लिया. वहाँ का खाना मैडनेस है. और क्या मिठाई बनारस में खा लो चल के. सुबह की कचौरी सब्जी नाश्ते में, क्या बात. वो एक आउटस्टैंडिंग, पता नहीं आप लोगों में से कितने ने खाई है. दो ना कौन कौन समझता है. जो अच्छा है वो बता दिया ना. हम भी तो प्यार करते हैं बिगड़ से. हर चीज थोड़ी अच्छी है. तो हाँ, ऐसा रेस्टोरेंट नहीं होते. मैं रेस्टोरेंट में नहीं खाता. जब मैं किसी भी बड़े शहर में जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मुझे बड़ी जगह मत ले चलो, मुझे अच्छी जगह ले चलो. तो ज्यादातर अच्छी जगह बड़ी नहीं होती है. क्या बात है. Okay, true or false following statements. If not a filmmaker, I would have been a chef or a restaurant owner. Okay. Yeah, true. Ra.one didn't deserve such criticism. Yeah, maybe, it's a hurt director talking. Yes, true. I think it should have been lauded for a whole lot of its achievements, which is happening now, but when I don't care anymore. But I would have liked to see more appreciation for the things it achieved at the time, not now. I don't know if anything like that exists, But it is very strange that I see Ra.one trending for its good things now, Right. and it barely received any appreciation then. And you were hurt by the certain, I think, unfair criticism that came from within the industry. Yeah, that will probably make me use some unparliamentary language, but I don't give a damn about it anymore. You know what I mean. Ji. Bheed deserve more love. Maybe not, because it didn't get any love. It's a very important film.
and maybe 10 years later they will love it. Like, thank you. No, but people didn't go to the theatre to watch the film, and that's a fact, hard fact, and I must respect it. But like Ra.one, if 10 years later people give it love, I will embrace it too. But I'll still be very hurt about the fact that they didn't go watch the film. They didn't go watch the film even on Netflix. Excuse me. Is it because you think that people in India are not tuned to going back to black and white? Could that be one of the factors? You know, I don't know. I would never know. There's too many reasons that I'm given by people who like the film. That maybe this is why they didn't go to see it. But I don't know. I don't know why they went to watch Thappad. I was convinced that nobody will watch Thappad. I was convinced men will not watch the film Thappad. But I've had phone calls from men just crying like babies without telling me why. Just wanting to thank me for making that film. So I don't know why those men were crying over the phone. I understand why women were crying. So you will never know. It's very intangible, no? How do you unquantifiable why someone watched the film or why not? So no, I don't know the answer. Okay, bhai, in following films, if you would like to maybe change something, like say, yeah, an Anek, Ra.one, Bheed, Das, or Thappad, anything that you'd like to change? The only thing I would like to change about Thappad is that I would change the pandemic that came 2 weeks after the release. Right. But I would want to change that for various other reasons also. The pandemic should not have happened. Thus, no, it's fun. Good. Ra.one? I would change some of the choices. Ra.one, I would change a few things. I would rewrite some. If Shah Rukh Khan wants to make a sequel of Ra.one, would you go ahead and do it with him? You know, you give your right hand to Shah Rukh, but you know, this is not the time for him to be doing Ra.one. He's in a different game, and he should just continue to play that game. I feel so happy for him. I feel so good for what. Yes, please. No. Yes, it was. Of course, it was commercial. But Ra.one, I made mistakes, and I take complete onus. All my bad. Like I said, I failed the film. I failed Shah Rukh, and yeah, a lot of people like the film, but you know, my opinion, my personal opinion, is that it could have been way better. Anek is something that I don't know what will I change about Anek, because Anek became too political, and that's what it was meant to be. So, you know, a very dear friend of mine, Basharat, who's a very senior journalist, Basharat Pir, he summed it up very well for me. He said, the very reason you made this film is the very reason it flopped. And the reason is people don't care about the Northeast. Alright, so एक शेर में ज़हन में आ रहा है कि आने वाली नस्लें तुम तो ट्वीट किया है कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरों, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने अनुभव सिन्हा को देखा है। Standing ovation for Anubhav Sinha.